आज हम करने लगे हैं ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक एंड दिस इज गोना बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू. Okay, without wasting any time, so let's begin. Okay, let me draw. Okay, there's a rough diagram of stomach. Wait, let me draw another diagram with a prominent lesser curvature. Okay, this one is better. Blood supply of stomach. You are gonna remember this within 5 minutes or less than 5 minutes. Do this. Hair celiac trunk. Celiac trunk is branch of abdominal aorta. This is one artery. I will tell you the names at the end. Okay. The dotted lines show that the artery lies behind the stomach. Okay. Here it shows that it lies behind the, what is this? Duodenum. Celiac trunk. There is a direct branch, left gastric. This is splenic. It gives three major branches: left gastric, splenic and common hepatic. कॉमन हिपैटिक से आगे प्रॉपर हिपैटिक निकल जाएगी जिसका ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक से कोई ओके वेट लेना देना है. Here comes the anastomosis. Remember like this: along the lesser curvature there is anastomosis, along the greater curvature there is an anastomosis. This is okay. Stomach lies on the left side. Hepatic artery है तो liver की तरफ जा रही है. Here lies the liver. Liver is on the right side. Okay, let's revise. Left gastric, common hepatic, proper hepatic, and this artery is gastroduodenal artery. This is right gastroepiploic. This is left gastroepiploic. Or these are short gastric vessels. Okay, the major blood supply is this. What is this part? Fundus. So short gastric vessel supplying the fundus. Okay, let's summarize the blood supply. Celiac trunk से left gastric निकलेगी along the lesser curvature. उससे कॉमन हिपैटिक निकलेगी, फिर प्रॉपर हिपैटिक और गैस्ट्रोड्यूडेनल दो ब्रांचेस देगी. प्रॉपर हिपैटिक से निकलेगी राइट गैस्ट्रिक और ये अनास्टमोस कर जाएंगे. गैस्ट्रोड्यूडेनल से गैस्ट्रोएपिप्लाइक निकलेगी, राइट साइड है तो राइट गैस्ट्रोएपिप्लाइक. सप्लीनिक से निकलेगी गैस्ट्रोएपिप्लाइक, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लाइक. और इट आल्सो गिव्स शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स टू द फंडस. ठीक हो गया. और ये मैंने शो की है सप्लीन, जो कि सप्लीनिक आर्टरी सप्लीन की तरफ जा रही है. ये तो होगी आर्टीरियल सप्लाई. ये जो मैंने शो किया है अभी हमारे इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है. दिस इज सुपीरियर पेनक्रियाटिक और ड्यूडिनल आर्टरी जो कि पेनक्रियाज और ड्यूडिनम को सप्लाई करती है. वीनस ड्रेनेज की बात करें तो दिस इज़ पेनक्रियाज, दिस इज़ नेक ऑफ पेनक्रियाज. Behind the neck of pancreas there is portal vein. This is portal vein. वो कैसे बनेगी? यहाँ से सप्लीनिक वेन आएगी, यहाँ से superior mesenteric वेन आएगी. तो जिस तरह के वेन्स के जिस तरह के आर्टरीज के नाम हैं, लेफ्ट गैस्ट्रिक, राइट गैस्ट्रिक, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक,
राइट गैस्ट्रोपिक लाइक उसी तरह से वेन्स के भी नाम हो जाएंगे। वेन्स के लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन और राइट गैस्ट्रिक वेन, ये पोर्टल वेन में दिखाई लेफ्ट, ये देख लेफ्ट गैस्ट्रिक राइट गैस्ट्रिक वेन्स विच टर्न इनटू पोर्टल वेन। और व्हाट इज दिस गैस्ट्रोपिक लाइक, तो जिस तरह से सप्लीनिक वेन, ये दिस इज सप्लीनिक वेन, तो यहाँ से निकलेगी गैस्ट्रोपिक वेन। और जो गैस्ट्रोपिक राइट साइड वाली है वो जाएगी सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन में। ठीक हो गया? इट मीन्स लेफ्ट गैस्ट्रिक राइट गैस्ट्रिक वेन्स drain into portal vein, left gastroplasmic drain into splenic, right gastroplasmic drain into superior mesenteric. Major venous drainage is portal vein, superior mesenteric, splenic vein. This for arterial supply is this. This is the blood supply of stomach.